Assalamu alaikum, dear students. Last time we discussed the lac operon. Now, I've already discussed that the lac operon in E. coli contains the three structural genes, that is Z gene, Y gene, and A gene. And these three structural genes are meant for the synthesis of three types of enzymes. Z gene codes for the enzyme beta galactosidase, which is responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose into its monomeric units, that is galactose and glucose. Y gene codes for the enzyme permease, that increases the permeability of the cell. And A gene codes for an enzyme that is transacetylase, which neutralizes the toxic beta galactosides inside the cell. Now, there is another gene that is called as the operator gene. Operator gene controls the synthesis of mRNA over the structural genes, and it is switched off by a repressor. And an inducer can inactivate the repressor and switch on the operator gene. There is a promoter gene, P gene, promoter gene, that is P. This promoter gene acts as an initiation signal. It acts as an initiation signal, which acts as a recognition center for RNA polymerase, provided the operator gene is switched on. RNA polymerase moves over it, that is over the operator gene, and reaches the structural gene to perform transcription. The RNA polymerase moves over it and reaches the structural gene to perform transcription. तो आपको सिंपली मैं बता दूं, अगर यहाँ पर ऑपरेटर जीन है, देयर इज द ऑपरेटर जीन. अगर यहाँ से कोई एक सबस्टेंस आता है, दैट इज आई जीन एक प्रोटीन बनाता है, दैट एक्ट्स एज द रिप्रेसर. आई जीन और रेगुलेटर जीन जो है ये बनाता है एक प्रोटीन दैट एक्ट्स एज रिप्रेसर. अगर इसके साथ अटैच होगा ऑपरेटर जीन के साथ, तो ये इसको इनएक्टिवेट करेगा, and we may say that this operon is switched off. तब ये प्रमोटर जीन जो है, it may not transcribe the mRNA. जो mRNA इनके ऊपर जाता है, mRNA that Z gene, Y gene और A gene, and they cannot synthesize the enzymes. So this repressor जो है ये इनएक्टिव करता है इस ऑपरेटर जीन को. ऑपरेटर जीन के कंट्रोल में है प्रमोटर जीन. प्रमोटर जीन mRNA नहीं बना सकता. जो mRNA इन स्ट्रक्चरल जीन्स
को एक्टिवेट करता टू सिंथेसाइज द रेस्पेक्टिव एंजाइम्स। इसको हम बोलते हैं स्विच्ड ऑफ। नाउ देयर इज regulator gene, another regulator gene, it is called as lac-I gene। lac-I gene उसको बोलते हैं। now the gene produces a repressor, that is protein। the gene जो है I gene और regulator gene, it produces a protein that is acts as the repressor that binds to operator gene and stops its working। Stops its working, that is, it switches off the operon। It switches off the operon। And this regulator gene जो है, it is the large gene in this operon। ये लार्ज जीन है इस ऑपरॉन में। नाउ रिप्रेसर क्या होता है? रिप्रेसर इज ए proteinaceous substance synthesized by regulator gene। it is a proteinaceous substance synthesized by regulator gene, that is I gene, और इसको R gene भी आप कह सकते हैं। I gene और regulator gene, this blocks operator gene so that structural genes are unable to form the mRNAs and enzymes। then the operon is said to be switched off। now a repressor has two sides, one for attaching to operator gene and second for binding to inducer। this repressor has two binding sites, one is for binding to operator and another is for binding to inducer। in presence of an inducer, यहां पर इंड्यूसर नहीं है, रिप्रेसर करेगा ये डायरेक्ट, इट कैन गेट अटैच टू ऑपरेटर। ये प्रमोटर जीन एमआरएनए नहीं बनाएगा एंड इट मे नॉट एक्टिवेट दीज जीन्स। ये जीन्स अपने एमआरएनएज नहीं बनाएंगे, ये एंजाइम्स नहीं बनाएंगे। इट इज सेड टू बी स्विच्ड ऑफ। लेकिन इस वक्त इसमें इंड्यूसर नहीं होगा। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर, ये इंड्यूसर क्या होता है बाद में करेंगे हम। ये इन प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर द रिप्रेसर अंडरगोज कन्फर्मेशनल change। in presence of an inducer, the repressor undergoes conformational change in such a way that it is unable to combine with operator। इसका मतलब है अगर एक इंड्यूसर है, एक इंड्यूसर यहां पर आ गया, दिस इज इंड्यूसर, दिस इंड्यूसर जो है दिस गेट्स अटैच्ड टू रिप्रेसर। इंड्यूसर गेट्स अटैच्ड टू रिप्रेसर और ये इसको चेंज करता है एंड इट इनएक्टिवेट्स दिस रिप्रेसर। सो दिस रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड विद दिस ऑपरेटर, इट बिकम्स inactive। But you have to remember, in presence of inducer gets attached to repressor, it becomes inactive. It cannot attach to operator and operator becomes active। This operator gene becomes active। So we can say this operon is switched on।
it is switched on. It activates the promoter gene. Thus promoter gene जो है, promoter gene gets what? Activated, and it transcribes the mRNA over Z, Y, and A, and these three genes are now active to synthesize their enzyme. And this enzyme जो है, these enzymes, they help in the breakdown of lactose. Now, this inducer is a chemical substance or hormone or other metabolite which, after coming in contact with the repressor, changes the repressor into non-DNA binding state so as to free operator gene, and operon is said to be switched on. The inducer for lac operon, जो है, inducer for lac operon is lactose or its derivative, that is allolactose. Lactose or allolactose. Lactose or allolactose. Now the inducer for lac operon is now E. coli is lactose. Now there is also a cap, CAP. It is not the cap-like structure, it is cap, CAP. Is activator called as, it is an activator called as catabolic activator protein. Catabolic activator protein. Catabolic activator protein. It exerts a positive control. It exerts a positive control in lac operon. It exerts a positive control in lac operon because in its absence, RNA polymerase is unable to recognize promoter gene. Because in its absence, RNA polymerase is unable to recognize promoter gene. It is an additional activator that is called as catabolic activator protein found in the lac operon, and it is meant for its positive control. Now we have the mechanism जो मैंने अभी आपको बताया. I will revise it. मैं रिवाइज करूंगा ये. मैंने कहा कि ये रेगुलेटर जीन जो है ये बनाता है एक प्रोटीन. ये प्रोटीन जो है इट एक्ट्स एज द रिप्रेसर. यही प्रोटीन एक्ट एज करता है रिप्रेसर. ये रिप्रेसर जब बाइंड होगा इट इज एक्टिव. नाउ यू कैन से इट इज एक्टिव. फॉर इंस्टेंस इट इज एक्टिव. This gets attached to, repressor gets attached to operator site, and it inactivates this gene, operator gene. ये इसको inactive करता है. जब operator gene inactive होगा, we say that it is switched off. Whole operon is switched off. तो क्या होगा? When this becomes inactive operator gene, we say that operon is switched off. Then promoter gene is not activated, and there is no activator found in the system. So it cannot synthesize the mRNA, which can activate these Z, Y, and A genes. So these genes cannot synthesize their mRNAs or enzymes. तो ये enzymes नहीं बनाएंगे. ये enzymes नहीं बनाएंगे, and there may be no metabolic reaction, no metabolism will be there.
And in this situation, there is no lactose found in the medium. तो यहां पर लैक्टोस नहीं है मीडियम में. देर इज नो लैक्टोस इन द मीडियम. लैक्टोस मीडियम में नहीं है, इसलिए ये होता है. अगर मीडियम में हम क्या डालेंगे अब? लैक्टोस. इसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ऑपरॉन है. अगर लैक्टोस हम डालेंगे, लैक्टोस जो है इट एक्ट्स एज एन इंड्यूसर. बेटा लैक्टोस अगर हम मीडियम में डालेंगे तो उसको बोलते हैं हम इट एक्ट्स एज इंड्यूसर. इंड्यूसर बाइंड होता है किसके साथ? वेरी गुड, रिप्रेसर के साथ. दिस इंड्यूसर गेट्स बाइंडेड विथ रिप्रेसर. और ये इस रिप्रेसर को इनएक्टिव करता है. इस रिप्रेसर को करता है इनएक्टिव. कौन? इंड्यूसर. लेकिन इंड्यूसर कौन है? लैक्टोस. और ये इनएक्टिव रिप्रेसर जो है, अब ये इनएक्टिव रिप्रेसर जो है, इट मे नॉट गेट अटैच्ड टू ऑपरेटर जीन. तो ये इस ऑपरेटर जीन के साथ अब अटैच नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज इनएक्टिव. ये इनएक्टिव कैसे बन गया? इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. इंड्यूसर कौन है? वो है लैक्टोस. ठीक. उसके बाद ये एक्टिव रहेगा, ऑपरेटर जीन रहेगा एक्टिव, एज रिप्रेसर इज नॉट अटैच्ड विथ operator. Why? Because repressor has become inactive. And we say that operator is switched. This like operon is switched on. This operon is switched on. अब क्या होगा? This promoter gene gets activated. As operator gene is active, operon is switched on. This becomes active. This synthesizes mRNA. This mRNA goes through these स्ट्रक्चरल जीन्स. ये है स्ट्रक्चरल जीन्स. एंड दीज स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं दे में सिंथेसाइज एंजाइम्स. ये बनाएंगे एंजाइम्स. और अभी हमने कहा कि लैक्टोस मीडियम में है एंड इट डिग्रेड्स दीज एंजाइम्स जो हैं दे ब्रेक डाउन द लैक्टोस इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस. दिस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. जब तक लैक्टोस इस मीडियम में है तब तक एंजाइम्स बनेंगे, तब तक ब्रेक होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोस में. इट इज मोनोमेरिक यूनिट्स में. एंड व्हेन दिस गेट्स लैक्टोस गेट्स हाइड्रोलाइज्ड, ऑल द लैक्टोस गेट्स हाइड्रोलाइज्ड. तो इसका मतलब है मीडियम में जब लैक्टोस नहीं रहेगा, जब ये डिग्रेड होगा, जब ये यूज करेगा बैक्टीरिया, एंड देयर में बी लैकिंग ऑफ इंड्यूसर. और ये इंड्यूसर जब नहीं होगा तब ये रिप्रेसर क्या बनेगा? एक्टिव. ये होगा किसके साथ? ऑपरेटर के साथ. और ऑपरेटर बनेगा इनएक्टिव और ये ऑपरॉन जो है इट इज स्विच्ड ऑफ. तो लैक्टोस जब तक है इसमें तब तक ये स्विच ऑन है, जब तक लैक्टोस नहीं है तब तक ये स्विच ऑफ है. नाउ वी हैव lactose regulates switching on and off of the operon. You may note it. Lactose जो है it regulates switching on and off of the operon. Lactose regulates switching on and off of the operon. Lactose is known to be the inducer. Lactose is known to be the inducer and the substrate for the enzyme beta galactosidase. जो मैंने भी कहा lactose is known to be the inducer, ये इंड्यूसर का काम करता है. एंड सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस. यहाँ पर एंजाइम का ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पर एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस. If lactose is provided as the carbon source in the growth medium, if lactose is provided as the carbon source in the growth medium, in the absence of the preferred carbon source such as glucose, the lactose is transported into the cells by the action of enzyme permease. The lactose then induces the operon, that is, it acts as the inducer. The I gene, जो मैंने भी कहा, the I gene
The I gene synthesizes the repressor of the operon. Repressor binds to the operator region. Repressor binds to the operator region of the operon, preventing RNA polymerase from transcribing the operon. Preventing RNA polymerase from transcribing the operon, and is inactivated by interaction with the inducer, such as lactose or allolactose. Now the repressor is inactivated. Repressor is inactivated. RNA polymerase is allowed to access to the promoter, and transcription proceeds. Now the regulation of lac operon by repressor is referred to as negative regulation. Regulation of lac operon by repressor is referred to as negative regulation. Now lac operon can work under the control of positive regulation also. Now when the lactose is absent, we can say when lactose is absent. When lactose is absent, I gene regulates and produces repressor mRNA in the absence of lactose, which blocks the transcription. The repressor protein binds to the operator region. Repressor protein binds to the operator region of the operon, and as a result prevents RNA polymerase from binding to the operon. The operon will be switched off. When repressor that is binded to operator. When lactose is present, it acts as an inducer. And binds to repressor. Thus, it forms an inactive repressor. The repressor fails to bind to the operator. And then the operon is said to be switched on. The RNA polymerase binds to the operator and transcribes lac mRNA. Lac mRNA is known to be polycistronic, which produces the three enzymes. This is polycistronic: beta-galactosidase, permease, and transestylase. In this situation, the operon is switched on, and these enzymes break down the lactose into glucose and galactose till the operator is switched on.